बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्चुअल कैंपस की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ का 20वां लेक्चर है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फ़ाद मुनीर अब्बासी हूँ। अगेन इस लेक्चर के स्टार्ट पे आई विल गिव यू द लेआउट ऑफ टुडेज़ लेक्चर. In today's lecture, we'll start with obviously the highlights of the previous lecture, what we have done previously. पिछले लेक्चर में जो कि 19th लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या चीज़ें और क्या कॉन्सेप्ट्स थे जिनको स्टडी किया और जिनको एनालाइज किया, उनसे ज़रा स्टार्ट करेंगे एंड देन विल बिल्ड अप ऑन दैट कि आज के लेक्चर के लिए उसमें से क्या क्या चीज़ें हमारी यूज़फुल साबित हो सकती हैं उनको देखेंगे. In today's lecture, we'll discuss the incompressible inviscid flow, or the very well known or very famous the Euler's equation of motion. इससे पहले हम basic hydrostatic equation देख चुके हैं और now we are coming towards more say generalized sort of equation. हम जैसे से equation को generalize करते जाएंगे real approximation, real life approximations की तरफ आते जाएंगे तो you will see इक्वेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और उनका एनालिसिस भी थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा. सो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखेंगे ये कोर्स और इसका एनालिसिस किस तरह इवॉल्व हो रहा. पर्टिकुलरली जब हमने बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की थी तो आई टोल्ड यू दिस इज द फोर्स बैलेंस इक्वेशन बट फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, द फ्लूइड इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. आज थोड़ा सा जब जनरलाइज करेंगे हम स्टैटिक के बजाय मूविंग फ्लूइड को एनालाइज करेंगे बट फॉर द इनकम्प्रेसिबल इनविसिड फ्लो. इनविसिड obviously related to ideal fluids for which viscosity is equal to 0, and you will see how we calculate the balance of forces and how we derive the equation. और उस equation को इनविसिड फ्लूइड के लिए जो फोर्स बैलेंस इक्वेशन है उसको आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है. Again, at that time also I told you कि physical concepts तो बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब, उनको स्टडी करना या उनको समझना ये तो एक obviously बड़ी हेल्पफुल चीज़ है. बट जब उन फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं तो all that physical laws and physical concepts are in the form of an equation or a set of equations for us. And again the force balance equation for the इनविसिड फ्लो इज गिवन बाय द आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन और इसको आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है. आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे एंड देन इसको एनालाइज भी करेंगे. आफ्टरवर्ड्स विल गो थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन के डिफरेंट फॉर्म्स कैसे बनती हैं और किस किस्म की मॉडिफिकेशंस उसके अंदर की जा सकती हैं, किस किस्म की सिंप्लीफिकेशन उसके अंदर की जा सकती हैं, ये भी देखेंगे. एंड एट द एंड ऑफ दिस lecture will do an example, solved example करेंगे, एक word problem करेंगे in which will calculate the pressure making use of the Euler's equation of motion. So ज़रूरी इस लेक्चर के स्टार्ट पे यही चीज़ और यही चीज़ आपको भी कहूँगा, थोड़ा सा अपना फोकस रखें इस चीज़ के ऊपर, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि किस तरह हम चीज़ों को जर्नलाइज करते जा रहे हैं. पहले हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड की बात की, फिर उसके बाद जब मूविंग फ्लूइड पे चले तो पिछले कुछ 2-3 लेक्चर से हम फ्लूइड की डिफॉर्मेशन और फ्लूइड की रोटेशन को एनालाइज करते आए. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मूविंग फ्लूइड एंड द फोर्स बैलेंस इक्वेशन फॉर द मूविंग फ्लूइड. बट वी हैव स्टार्टेड विद द आइडियल केस और द इनविसिड केस. तो देखते जाएं, ये पैटर्न नोट करते जाएंगे किस तरीके से हम चीज़ों को जनरलाइज करते जा रहे हैं. देन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल समराइज वट एवर वी हैव डन in today's lecture. आज के लेक्चर में जो कुछ करेंगे आखिर में ब्रीफली मैं उसको समराइज कर दूंगा. Now previously we performed the general analysis of fluid motion. Fluid motion का general analysis हमने perform किया था previous lecture के अंदर, जहाँ हमने स्टोक्स equations देखी थी, जहाँ हमने tangential and normal stresses calculate की थी and we saw that कि किस तरीके से stresses को calculate किया जा सकता है when the velocity field is known. At that time as well I told you that velocity field is very important in the analysis of fluid flow. उसकी basic और prime वजह ये है कि if the velocity field is known to us then we can know several things about the fluid flow.
अगर वेलोसिटी फील्ड हमें नोन है तो हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम स्ट्रीम फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेलोसिटी फील्ड के ऊपर हेविली डिपेंड करती हैं। अगेन इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस वेलोसिटी विल प्ले अ की रोल, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो कैलकुलेटेड द स्ट्रेसेस मेकिंग यूज ऑफ द वेलोसिटी। अपने वेलोसिटी को यूज करते हुए स्ट्रेसेस, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट की थी इन द प्रीवियस लेक्चर। Well, starting with today's lecture, these are for the incompressible inviscid flow. टर्म्स को जहन में रखते जाएं। इनकम्प्रेसिबल इनविसिड फ्लो, इनकम्प्रेसिबल से आपके जहन में फौरन से एक चीज़ आनी चाहिए। अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को डिस्कस किया, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को जब डिराइव किया दैट वाज से कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इंटरप्रेट किया था। सो इनकम्प्रेसिबल के लिहाज से आपको अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हैं और इस कोर्स को जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, आपके जहन में दो चीज़ें फ़ौरन से आ जानी चाहिए। पहली चीज़, इनकम्प्रेसिबल का मानी और मतलब एक है कि जनाब उसकी डेंसिटी वेरी नहीं कर रही। दूसरी चीज़, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी फील्ड इज़ ज़ीरो फॉर सच टाइप ऑफ फ्लूइड्स एंड फॉर सच टाइप ऑफ फ्लोज। सो ये दो चीज़ें, फिजिकल कॉन्सेप्ट भी इसका और मैथमेटिकल भी, ये दो चीज़ें आपके जहन में फ़ौरन से इनकम्प्रेसिबल के नाम से क्लिक कर जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आज के लेक्चर में भी ऑब्वियसली एंड ऑनवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। अगेन द सेकेंड टर्म इज इनविसिड फ्लो। You should be familiar with the name inviscid flow, because हमने इस टर्म को यूज भी कई दफ़ा किया, एंड आई टोल्ड यू बेसिकली इट इज कंसर्न विद द फ्लूइड्स फॉर विच विस्कोसिटी इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल और जीरो विस्कोसिटी, या जिनको हमने आइडियल फ्लूइड्स का भी नाम दिया था। सो आइडियल फ्लूइड्स और प्लस इनकम्प्रेसिबल हों तो उनके लिए ये जो एनालिसिस है और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैलिड होगी। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसकी वैलिडिटी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है और कहाँ तक इसकी लिमिटेशंस हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेट्स स्टार्ट जी। इस फ्लो इक्वेशन को आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम दिया जाता है। आइलर के नाम से द ग्रेट साइंटिस्ट, उनके नाम से जनाब इनको मंसूब किया जाता है। वेल, द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रिक्शनलेस फ्लो आर नोन एज आइलर्स इक्वेशंस। These equations are derived by applying the Newton's law of motion to a fluid particle. The motion of a fluid particle under ideal conditions, that is forces such as surface tension, electromagnetic forces, are considered absent, since effects of viscosity are not considered at all for ideal flow fields. Shear stress will play no role in the motion of inviscid flow. Well, shear stresses play no role in the motion of inviscid fluid, and I must correct here that this is not W, this is shear stresses play no role in the motion of inviscid fluid. Obviously at that time we analyzed and studied that shear stresses are a result of viscous effects. Viscous effects की मौजूदगी से shear effects जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और ये इफ़ेक्ट करती हैं विस्कोसिटी की प्रेजेंस उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। इफ़ विस्कोसिटी इज़ एब्सेंट देन द shear stresses will vanish. So इस केस के अंदर बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द इनविसिड फ्लो, द shear stresses will play no role in the motion of inviscid flow. Again, we'll use the famous Newton's second law, which states that force is equal to mass into acceleration. उसको use करते हुए force balance हम find करेंगे for incompressible inviscid flow. Now let us consider a finite size control volume through which an inviscid fluid is flowing. For the sake of simplicity and clarity, assume the finite size control volume is stationary relative to an inertial non-accelerating frame of reference x, y, z as shown in the figure. We'll move towards the figure in the next slide, but अभी तक के लिए अगेन जैसा कि एनालिसिस हम के लिए डिफरेंशियल साइज कंट्रोल वॉल्यूम हम कंसिडर करते रहे जब हमने
कंटिन्यूटी इक्वेशन भी डिराइव की थी एंड जब हमने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन को भी एनालाइज किया था तब अगेन द पैटर्न इज सेम, द डिफरेंशियल साइज फाइनाइट साइज कंट्रोल वॉल्यूम हमने कंसीडर किया जिसमें से फ्लूइड इज फ्लोइंग एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव assumed that the finite size control volume is stationary relative to an inertial non-accelerating frame of reference. You must be aware, mathematics के student हैं कि what is an inertial frame of reference? Any frame of reference which is at rest or in the uniform state of motion is known as inertial frame of reference. So ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसिडर किया है जहाँ से हम मेजरमेंट्स अपनी कैरी आउट करेंगे एक्स वाई एंड जी डायरेक्शंस के अंदर, दीज आर इम्पॉर्टेंट for the analysis as well. Now let the flow properties, pressure, density, x, y and z components of the velocity at the center of the particle be known. Then flow properties at the center of particles, various phases can be obtained through Taylor's theorem. Again the pattern is the same which we have been doing for the other equations as well in the previous lectures. कि उस कंट्रोल वॉल्यूम के सेंटर के ऊपर हमें प्रेशर की, डेंसिटी की और एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी की वैल्यूज़ फाइंड हैं और फेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे मेकिंग यूज़ ऑफ द टेलर्स थ्योरम. नाउ applying the Newton's second law of motion to the fluid particle, we have the balance of momentum for infinitesimal displacement in Cartesian directions x, y and z. We'll move towards that. Before that I'd like to show you the diagram or the figure of what we are doing presently. Consider this is the frame of reference. X, Y and Z directions are labeled by these arrows and this is the finite size control volume जिसका टोटल वॉल्यूम और अगर इसकी साइड्स को हम लेबल करें तो dx, dy and dz हमने इनको नाम दिया और ये इनकी डायमेंशंस हैं इन साइड्स की. ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दिस कंट्रोल वॉल्यूम. These arrows are showing that the fluid is flowing through this control volume and जो fluid इस differential size finite size control volume के अंदर से पास कर रहा है हमें उसकी equations और उसकी balance equations force balance equations हमने find करनी है. Keep in mind that this fluid is inviscid incompressible fluid. तो obviously हम इस चीज़ को भी take care करेंगे कि इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल की प्रॉपर्टीज़ को भी यूटिलाइज करेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग टेक अ लुक एट दिस ज्योमेट्री. दिस इज द सेंटर ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम एंड वी नो द प्रेशर P, द डेंसिटी rho, the x, y and z components of the velocity which are u, v and w. हमें इनकी वैल्यूज़ इस सेंटर पॉइंट के ऊपर पता है एंड वी कैलकुलेट द वैल्यूज़ of these quantities at the center of various faces. जैसे ये एक फेस है इसके सेंटर पे, then the opposite face उसके सेंटर पे and then इस फ्रंट एंड बैक फेस इनके सेंटर पे हम टेलर्स थ्योरम को यूज़ करते हुए ऑब्वियसली इनको यूज़ करते हैं जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करते आए हैं. एंड अगेन we'll suppose that this face or this control volume is so small कि जो वैल्यू फेस के सेंटर पे है वही वैल्यू तमाम फेस के ऊपर equally distributed है for this case. Now for the x direction the force balance is given as summation of all the forces acting in the x direction is given by m and its product with a into x. This is the Newton's second law, F is equal to ma, and this subscript x denotes the force in the x direction and this subscript denotes the acceleration caused by the force in the x direction. Simply Newton's second law को हमने mathematically उसकी equation हमने लिख ली and now we are say processing this equation according to our geometry. The sum of forces acting on the particle in the x direction is, now the sum of forces जितनी forces x direction के अंदर act कर रही हैं these are given by this equation or the summation. The left hand side shows the summation of the forces on the left hand in the x direction. Well, the first term here is the pressure force or the pressure force acting in the x direction. Take a look at this again. जैसा कि हम front और back face के ऊपर differences calculate करते हैं, this is the same in the same way हमने
जो एक्स डायरेक्शन के अंदर फेसेस थे, ये फ्रंट फेस एंड दिस बैक फेस, इसके ऊपर टेलर्स थ्योरम यूज करते हुए प्रेशर की वैल्यू एट बोथ द फेसेस, उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया है. वेल दिस डिफरेंस गिव्स अस द टोटल प्रेशर फोर्स एक्टिंग in the x direction, and obviously multiplied by the area of the faces. And the second force which is acting is the gravitational force. Obviously we have tackled this equation in the, this term in the basic hydrostatic equation as well. Now rho g and acting on the control volume, and g subscript x denotes that the component of gravitational field acting in the एक्स डायरेक्शन. अगर कोई भी और बॉडी फोर्स ने, अभी तक हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई जनरलाइजेशन नहीं की, कोई हमने और ना जनरलाइजेशन किया ना स्पेसिफाई किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है. नो, इसलिए कोई भी किस्म की बॉडी फोर्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो इस एनालिसिस में अभी तक में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं पड़ेगा. अगर इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो सिंपली गेट that the forces acting in the x direction is the sum of pressure force and the gravitational force here. A minus sign denotes that there is a decrease in pressure when you move in the x direction. And this is rho, which is the density of the fluid, gx, and is the x component of the gravitational force, and dx, dy, dz are the dimensions of the control volume. Well, mass of the fluid particle obviously is m, और अगर density की interpretation से अगर आप mass को देखें तो you'll simply get this rho v. This is the total volume of the control volume. अगर आप थोड़ा सा इसको recall करें aside, तो density की definition was mass per unit वॉल्यूम. तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज हेयर गिवन दैट. अमूमन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज के हाउ वी आर राइटिंग डेंसिटी एंड डी एक्स डी वाई डी जी instead of the mass. So it's simply by the definition of the density that it is the ratio of mass and volume, and simply we deduce the definition of mass from there. और in very simple manner, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ को अगर आप देखें, which was say F is equal to ma, तो मास की डेफिनेशन को जो हमने यूज किया, सेंस रो dx dy dz, dx dy dz, as I told you, these are the dimensions, and when the product of dy dz is taken, it gives the total volume of the control volume. So here it is, it's given here. So अगर न्यूटन्स सेकेंड लॉ को यूज करते हुए हम अपनी जो फोर्स बैलेंस इक्वेशन है इन द एक्स डायरेक्शन, विच इज नेम्ड एज इक्वेशन 2, इसके अंदर हम इस इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करें तो विल सिंपली गेट दैट रो जी एक्स माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई डी जी इज इक्वल टू रो ए एक्स डी वाई डी जी. हमने फोर्सेस को बैलेंस किया है, जो टोटल फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही थी कंट्रोल वॉल्यूम पे, एंड द न्यूटन्स सेकेंड लॉज, द इनर्शियल फोर्स हेयर which was equal to say F is equal to ma, वो हमने substitute की and came out to be of the form given in equation 4. Well, these are all the forces which are acting in the x direction alone, but we are considering for the whole control volume. तमाम पूरे के पूरे control volume के लिए हम consider कर रहे हैं. So हमें x डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस भी चाहिए, y डायरेक्शन के अंदर एक्ट करने वाली फोर्सेस भी चाहिए, एंड z डायरेक्शन के अंदर एक्ट करने वाली फोर्सेस भी चाहिए. तो x डायरेक्शन के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको बैलेंस करके हमने एक इक्वेशन 4 तो राइट कर ली. सिमिलरली when we'll write the equations for the y direction, we'll get the one given in equation 5. And simply again आप सिर्फ देखें इसमें डिफरेंस सिर्फ किस चीज़ का, कि it is the y component of the gravitational force, the
partial derivative of pressure with respect to y, obviously because we are calculating the change in pressure with respect to y, and y component of the acceleration as well. उन्हीं grounds के ऊपर, जिन grounds के ऊपर हमने force balance equation in the x direction calculate की, again on the same grounds we will calculate the force balance equation in the y direction as well, and in the z direction as well. So equation 4, 5 and 6 give us the balance of forces in the x, y and z directions respectively. Now adding equations 4, 5 and 6 vectorially इनको add करें because they include vectors in them. So अगर इनको add up करें, we'll see the x component of acceleration, the y component of the acceleration, which is obviously with the j unit vector, and z component of the acceleration in the obviously k direction with the product rho and the volume itself. जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ की जो टोटल इनर्शियल फोर्सेस थी वो हमने एक तरफ रख के उनको सम कर दिया, प्लस जो बाकी बैलेंस इक्वेशंस थी हमने उनको राइट हैंड साइड पे रख के उनको सम कर दिया. टेक अ लुक, partial p by partial x, partial p by partial y and partial p by partial z to dx dy dz, plus rho into this term represents the gravitational force here. This is the gravitational force, this is the pressure force. So the total force acting in all three directions on the control volume is given by equation 7. On the left hand side, these are inertial forces calculated by making use of the Newton's second law, and on the right hand side there are two types of forces. First one is the pressure force and second one is the gravitational force. Now dividing equation 7 by the material particle volume dv and then letting the volume dv approaches to 0, दोनों साइड्स पे कंट्रोल वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम है उसके उससे डिवाइड कर दें एंड टेक द लिमिट dv इक्वल टू 0. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम ये लिमिट dv इक्वल टू 0 क्यों कंसिडर करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर. दिस इज इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज वी अज्यूम दैट द वॉल्यूम इज सो स्मॉल कि हम इस एनालिसिस को थ्रू आउट द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू आउट द फ्लो जो है वो एक्सटेंड कर सकें. दोनों तरफ इक्वेशन 7 के दोनों तरफ कंट्रोल टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद अगर लिमिट लें तो विल फाइनली अराइव एट द इक्वेशन गिवन हेयर. और सिंपली अगर आप इसको वेक्टर नोटेशन के अंदर लिखें तो रो एंड एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर because it contains the x, the y and the z component, and the gradient of pressure with a negative sign plus rho and g, which is the gravitational term or gravitational force here. Now again मैं आपको फिर दोबारा आप हर स्टेप पे इसको साथ साथ ऑब्जर्व करते जाएं, which I am telling you again and again that this is the total force and which is the sum of pressure force and the gravitational force. So there are only two types of forces acting. First one is the gravitational force and the other one is the pressure force. And this mathematically अगर इनकी representation देखी जाए तो this is gradient of pressure and this is simply product of rho with the g or the body force which is acting on it. अगर density को divide कर दें on the both sides we'll simply get A, which is the acceleration, is equal to -1 by rho del p plus g, and this is named as equation 8. Keep in mind the acceleration here, जैसा कि हमने previous lectures के अंदर जब acceleration को हम study कर रहे थे तो हमने देखा था it was total change in velocity. It's not the simply say just the convective or the local rate of change. It is a total change in the acceleration which is given by this equation here to remind you that this is the total change in velocity which is the sum of the local rate of change and the convective rate of change. So on the left hand side we have say this sort of thing, and on the right hand side we have the two terms which consider the balance of forces. Now making use of the definition of acceleration, we simply get the form given in equation 9, whereas partial v by partial t denotes the local rate of change in velocity, and the second term on the left hand side of equation 9 represents the convective change in the velocity, and it is equal to -1 by rho del p or the gradient of pressure
and the gravitational force itself. Now equations 9 and 8 are different forms of Euler's equation of motion in vector notation applicable at each point of the control volume of finite size. ये equation 8 and equation 9 Euler's equation of motion की different forms हैं. These are applicable to every point. अब हमने कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर कोई जर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी. हमने dx, dy, dz जर्नल लेंथ्स कंसिडर की थी, जर्नल डायमेंशंस कंसिडर की थी, एंड देन we took the limit dv equal to 0. So these equations are valid at every point in the control volume and in the flow field as well. इन दोनों इक्वेशंस को मुख्तलिफ तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है. अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन गिवन है तो देन यू कैन यूज द form of Euler's equation of motion given in equation 8, but if you are provided with the velocity field then you have to make use of equation 9 in order to pursue your analysis. अगर इसको component form के अंदर लिखा जाए equation 8 को, तो इसकी form कोई ऐसी होगी. The x component is given in equation 10, which represents that rho ax is equal to minus partial p by partial x rho gx. Simply again the change in pressure in the x direction plus the gravitational force acting in the x direction, and again likewise for the y and z components as well. So component form के अंदर Euler's equation of motion is given through equations 10 to 12 in this slide. Now जहाँ पे accelerations 0 हैं, देखिए मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बताना चाह रहा हूँ, and I just want you to observe it. Take a look at this. What was the difference of a basic hydrostatic equation from other equations? That was for hydrostatic fluid. देखिए आप किस तरीके से चीज़ें जर्नलाइज हो रही हैं, जो मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्ट पे भी एक ही चीज़ बार बार कह रहा था, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू हियर एज वेल कि बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, दोज वर द फोर्स बैलेंस इक्वेशंस for the fluid in static equilibrium, and at that point also I told you कि static equilibrium के लिए ज़रूरी है कि acceleration 0 हो, either fluid is at rest or is in static equilibrium. So acceleration must be 0 in order for the fluid to be in static equilibrium. अगर तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशंस हैं तो इनको रिड्यूस हो जाना चाहिए इन पर्टिकुलर केस में. अगर ये बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म है तो इनको रिड्यूस हो जाना चाहिए. टेक अ लुक कि बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के अंदर द एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू 0. अगर एक्सेलरेशन को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशंस 10 to 12 तो आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी? ax will be 0, ay will be 0, and az will be 0. So the left hand side of these equations will vanish at once, and you will simply get the component form of the basic hydrostatic equation. अगर उसको recall करें तो simply that was the balance between the pressure and the gravitational forces. So अगर Euler's equation of motion को static fluids के लिए write up किया जाए, उसको reduce किया जाए, तो static fluids के लिए obviously the change in velocity will be equal to 0 or the acceleration will vanish. तो acceleration vanish करने से आप देखेंगे कि Euler's equation of motion are reduced to the basic hydrostatic equation. अमूमन एग्जाम्स के अंदर भी या मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप एमफिल या पीएचडी के लिए परस्यू भी करेंगे तो मुख्तलिफ टेस्ट्स या इंटरव्यूज़ के अंदर दिस इज़ ऑफनली आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट हाउ यू कैन रिड्यूस द Euler's equation of motion into the basic hydrostatic equation. So it's simply that the basic hydrostatic equation is for the fluids in static equilibrium. So in order for the fluid to be in static equilibrium, its acceleration should be equal to 0. And by substituting the acceleration equal to 0, one can reduce the Euler's equation of motion into the basic hydrostatic equations. And here it is stated that for ax, ay, az equal to 0, the equations 10 to 12 reduce to the basic hydrostatic equations as developed for a fluid particle in static equilibrium. Now introducing the values of ax, ay, az in equations 10 to 12, हम अगर separately total derivative of x, y and z component of the velocity को write up करें equations Euler's equation of motion के अंदर, तो जो फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बनेंगी
these are given in from 13 to 15. यहाँ हमने किया क्या, simply since x component of the acceleration was the total change in the x component of velocity, और हमने du by dt को making use of the definition of the total derivative हमने इसको write up किया, which comes out to be partial u by partial t plus u partial u by partial x plus v partial u by partial y plus w partial u by partial z. So ये generalized form अगर हम total derivative की definition use करें तो we can write the Euler's equation of motion in component form in the manner given through equations 13 to 15, and similarly for the x, y, y and z components of the acceleration as well. Equations 13 to 15 are again Euler's equation of motion in rectangular coordinates applicable at each point of given flow field. All forms of Euler's equation of motion are applicable for ideal plus इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखते जाएं कि किन चीज़ों के लिए ये applicable हैं. All forms of the Euler's equation of motion are applicable for ideal plus irrotational, compressible, barotropic and unsteady flow. अभी तक हमने इसके ऊपर कोई जनरलाइजेशन इस लिहाज से नहीं लगा, कोई रिस्ट्रिक्शन इस लिहाज से हमने इम्प्लीमेंट नहीं की. सिर्फ शुरू में जो चीज़ लेके चले, फर्स्ट वॉज द कंडीशन वेयर द इनविसिड फ्लो. अभी तक हमने इनकम्प्रेसिबिलिटी की कंडीशन भी कहीं भी इम्पोज नहीं की. सो these equations are valid अभी तक के लिए, valid for ideal, irrotational, and these are valid for compressible as well, barotropic and unsteady flow field. Barotropic, again, I like to make you recall that barotropic fluids are the fluids for which density is a function of pressure alone. Well, they are non-linear in nature. Now I leave it up to you why these equations are non-linear. Well, there is no point in leaving it for you because you can clearly see that the convective part here in these equations, this part here in all these equations make it the non-linear. So the convective part will make the equation non-linear. Hence the Euler's equation of motion are non-linear in nature, and if they can be integrated for a given finite size control volume, the resulting expressions describe the velocity and pressure fields in a gravitational force system for a given flow phenomena. Basically इनका solution मुश्किल ज़रूर इस वजह से है कि these are non-linear equations and non-linear coupled equations in the generalized form, जो कि form equations 13 to 15 के अंदर given है. तो अगर आप उसको थोड़ा closely देखें, it's a non-linear plus the fact it is coupled equation. So इनका general solution is analytical solution is difficult, but if they can be integrated, then they can give the velocity and pressure field for the given flow phenomena. आप velocity and pressure determine कर सकते हैं making use of these equations. Now if there is a body force rho f other than the gravity, then Euler's equation of motion 8 gives, again at that point I told you कि अगर gravity के अलावा भी कोई body force इसके ऊपर ऐड कर रही है तो आप simply उसकी जगह पे g की जगह पे उस जो दूसरी बॉडी फोर्स है से f का अगर हमने उसको नाम दिया है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, प्लस द फैक्ट कि अगर कोई ग्रेविटी मौजूद नहीं है तब अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ कोई और फोर्स मौजूद होगी देन वी विल ऐड द ग्रेविटेशनल फोर्स हेयर एज वेल, एंड दिस इज गिवन इन इक्वेशन 16 or simply you can write it as the form as in the form given in equation 17. Well, in tensor form equation 17 is given in this manner, and we have labeled it as equation 18. This is simply the tensor notation of the Euler's equation of motion for general body force represented by the capital F. Now there is a vector identity which states that gradient of dot product of two vectors is given through this relation here. अगर इस आइडेंटिटी के अंदर u और v दोनों सेम वेक्टर्स हों या दोनों को इक्वल रखते हैं then this identity reduces to this form. अब इसको हम यूज करके मजीद एनालिसिस परस्यू करना चाह रहे हैं. ठीक है, look at this gradient of v dot u, or simply because u is equal to v, so you can simply say that the gradient of v dot v
इज इक्वल टू दिस हेयर. अगेन सिंस u इज इक्वल टू v, तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं. एंड फिर देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया है. सिंपली 1/2 del v स्क्वायर, हमने चूंकि ये सिंस u इज इक्वल टू v, so grad of v dot u is equal to grad v dot v and equal to del square v or del v square. You can simply say del v square. Here it is, and we have used this fact here. Now मज़ीद simplify अगर इसको करें, and this curl of v again is the vorticity. अगर आप चीज़ों को fluid की rotation को अगर थोड़ा ज़हन में रखें तो curl of v is equal to rotation. Keep in mind अभी तक के लिए we have not implemented any condition that the fluid is rotational or irrotational. अभी तक के लिए हमने कोई चीज़, अगर fluid rotational होगा तो उसकी क्या condition दी, that the curl of velocity will be equal to 0. तो this term will vanish if the fluid is irrotational. But अभी तक के लिए हमने irrotational और rotational की कोई बात नहीं की, इसलिए हम general analysis pursue कर रहे हैं. तो simply से कर्ल ऑफ v की जगह हमने ओमेगा रिप्लेस कर दिया एंड सिंपली अपने एनालिसिस को परस्यू किया. तो वी कैन सी दैट v डॉट डेल v और द कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 1/2 डेल v स्क्वायर माइनस v क्रॉस ओमेगा. और सिंपली अगर क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करें देन वी कैन replace the negative with the positive sign. Now making use of equation 19 and equation 17, the convective part को हमने replace कर दिया है through this part and we can simply get that सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन 17 के चेंज आई है. हमने कन्वेक्टिव पार्ट की जगह ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी जो कि हमने वेक्टर आइडेंटिटी से कैलकुलेट की एंड दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन 20. Now equation 17, 18 and 20 are different forms of equation 16. These are different forms of Euler's equation of motion. Again I repeat, अभी तक के लिए हमने इसके ऊपर कोई restriction, कोई particularity नहीं लगाई. Now इसके मुख्तलिफ केसेस हम डिस्कस करेंगे एंड विल सी कैसे इसको परस्यू किया जाता है. व्हेन द फील्ड ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर जो फोर्स फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, व्हिच इज कंजर्वेटिव, तो अभी हमने एक वेक्टर वी स्टडीड दैट द इफ फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव देन वी कैन राइट द फोर्स फील्ड इन द फॉर्म ऑफ से ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन से फाई. सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हम इक्वेशन 21 की फॉर्म के अंदर फोर्स को लिख सकते हैं और इसी फोर्स फील्ड को अगर सब्स्टिट्यूट करें इन आवर आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन थ्रू इक्वेशन 20 वी गेट इक्वेशन 22 एंड इन टर्न इक्वेशन 22 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करें तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं. फर्दर इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन रो इज कांस्टेंट. अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए चूंकि डेंसिटी कांस्टेंट होगी सो हम इसको डेल ऑपरेटर से अंदर भी लिख लें तो इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ राइटिंग इट आउटसाइड द del operator or the differential operator because it is constant, so it makes no difference. So we have arranged this equation 23 and we have obtained equation 24 by taking the del operator common throughout these terms on the right hand side. Okay, दूसरा case, when the fluid is compressible such that the density is a function of pressure alone. अगर प्रेशर का ही सिर्फ डेंसिटी फंक्शन है तो यू कैन से दैट इट इज ऑब्वियसली द बैरोट्रॉपिक फ्लूइड. तो यू कैन राइट अ कैपिटल पी फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ डी पी ओवर रो बिकॉज देयर इज, अगर आप इस इक्वेशन को देखें देयर इज पी बाय रो, तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं व्हेन डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर अलोन. देन हियर इट इज, और अगर इस टर्म को इंटीग्रेट करें
तो simply you get dp or d capital P over dp is equal to 1 by rho, where del p is partial p by partial x, partial p by partial y, and partial p by partial z as the x, y, and z components of this operator. Now, since this pressure is, say, this capital P is a function of x, y, and z, then इस operator के ऊपर अगर हम chain rule अगर utilize करें, तो we can simply say that del capital P is equal to dp over d small p, and by making use of the chain rule, it's partial p small p by partial x, which is a pressure, and again replacing using the chain rule, we can write it in this manner. So dp over d small p is written in this way, or in other words हम इसको gradient of pressure की form के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसा कि we have written it here. Now, making use of this equation, we simply get equation 25 के अंदर को अगर हम utilize करें, तो we simply get that del capital P is equal to 1 by rho del P, और इसको equation 26 का नाम दिया. Since fluid is compressible, so del P obviously अगर compressible fluid के लिए density will be a function of say pressure और temperature, और इस केस के अंदर हमने pressure का function suppose किया है, तो हम simply इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं given through equation 27. और अगर equation 27 को यूज़ करें equation 24 के अंदर, तो हम जो p small p over rho की जो टर्म थी उसको हम capital P से replace कर सकते हैं, which we did and we named it as equation 28, जहाँ capital P is the integral of density with respect to pressure. Now, equation 28 is the equation of motion for frictionless flow of a fluid whose density is a function of pressure and which is under action of a conservative force, a field of force. देखें ये जो equation 28 है Euler's equation of motion, it is a particular form, not a generalized form. This type of equation is for a compressible fluid for which density is the pressure function of pressure alone, and which is under the action of conservative field of force. Now take a look at another case. If the fluid is in a gravitational field such that the gravitational acceleration is along the z-axis, only along the vertical axis, then इसकी form क्या होगी? Then the g or the gravitational force will act only in the z direction. तो हम simply total उसको force के बजाय हम उसको simply change in the z coordinate की form के अंदर represent कर सकते हैं, और इसको equation 30 का हमने नाम दिया. Now मज़ीद अगर आप देखें इस example पे जाने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को generalizedly अगर दोबारा एनालाइज करें, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ताकि ज़रा चीज़ों को कंपाइल करके देन वी सॉल्व दिस एग्जांपल. दिस एग्जांपल स्टेट्स दैट द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. v velocity obviously of the fluid is given. v is x square y plus y square I minus xy square j. Find out, first thing, the pressure gradient in the x and y directions, neglecting viscous effects. Second thing is the value of pressure gradient at the point 2, 1 if the fluid is water. देखें, pressure gradient हमें find करना in the x and y directions, neglecting the viscous effects. Also, the values of the pressure gradient एक particular point के ऊपर find करनी है, and we are provided that the fluid is water. हमने ये जो Euler's equation of motion हमने find किया was about to say the Navier-Stokes equation, obviously, which is the more or the most generalized of all these equations. जब हम उसके ऊपर move करेंगे तो you'll see कि किस तरीके से वो बहुत generalized हैं. जैसा कि इस केस के अंदर I told you that the basic hydrostatic equation can be retrieved as a particular case of the Euler's equation of motion. At that point, I told you that the basic hydrostatic equation is a particular form of the Euler's equation of motion, and likewise the Navier-Stokes equations are the most generalized form. तो ये जो हमारी Euler's equation of motion है, this will become a particular case of the
Navier-Stokes equation, but you will see in the upcoming lectures that how we tackle those equations. अभी तक के लिए उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कंपाइल करके ज़हन में रखें जो भी हमने आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट से स्टडी की, उनको यूज़ करते हुए हम इस एग्जांपल को, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी. सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड दैट वी वेलोसिटी फील्ड इज प्रोवाइडेड टू अस, x and y components of the velocity are given, and the pressure gradient जो हमने calculate करना है in the x and y directions. Second thing, the pressure gradient at point 2, 1 in the and the fluid is water. So we are going to start with the Euler's equation of motion for this type of a problem, and you will see that we are given, provided that v is equal to x square y plus y square I minus, obviously I is the unit vector, minus x y square which is j unit vector. अगर आप इनको कंपेयर करें with the general form of the velocity or compare it with ui plus vj plus wk, so you'll see that u is equal to x square y plus y square v is equal to minus xy square and w is equal to 0, and w is equal to 0 here. Now partial u by partial x is equal to 2xy, and partial u by partial y, partial u by partial y is equal to x square plus 2y. Similarly, partial v by partial x, partial v by partial x is equal to minus y square, and partial v by partial y is equal to minus 2xy. Okay, now Euler's equation, Euler's equation of motion for two-dimensional. Why it is two-dimensional? Because the third component of the velocity, or the z component of the velocity, is equal to 0. For two-dimensional flow, neglecting viscous effects, Euler's equation of motion for two-dimensional flow, obviously, which is neglecting the viscous effects, because Euler's equation neglects the viscous effects, is R given as, अगर रिकॉल करें जल्दी से उसको, अगर आप रिकॉल करें, simply get rho u partial u by partial x plus v partial u by partial phi is equal to minus partial p by partial x. तो जो बॉडी फोर्स की टर्म या जो ग्रेविटेशनल फोर्स की टर्म यहाँ पे थी, सिंस देयर इज नथिंग सेड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें नहीं बताएगी इसके अंदर, सो वी सेफली कैन अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू 0. इसको
equation 1 का नाम दें. This is the x component of the Euler's equation of motion, and the y component will be rho u partial v by partial x plus v partial v by partial y equal to minus partial p by partial y. Name it as question 2. Now substituting the values of these derivatives, जो हमने derivatives calculate किए हैं, इनकी values और इन u and v की value अगर यहाँ substitute करें तो you will see that partial p by partial x is equal to minus rho x cube y square and partial p by partial y is equal to minus rho minus y square plus x square y cube. u, v and partial derivatives की values अगर substitute करें तो you'll see that the partial derivatives of pressure with respect to x and y will come out to be equal to this. Again I leave it up to you कि इसको ज़रा एक दफ़ा आप खुद भी solve करके verify करें कि आया ये जो answers मैंने आपको provide किए हैं they are correct or not, or there is some difference between your calculation and my calculation here. Obviously आपको verify करना इसलिए ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए छोड़ देता हूँ because I want your input as well in this equation. These are trivial things जो partial derivatives और simple calculations है, इसको अगर छोड़ देता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग interact करें because यहाँ पे इस form of communication, इस form of teaching में ज़्यादा communication का gap रह जाता है. उस गैप को कवर अप करने के लिए कि आप साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाएं और इसको यहीं पे रोक के आप कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करके वेरीफाई करें कि आया ये जो डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने प्रेशर के कैलकुलेट किए मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 ये करेक्ट भी हैं कि नहीं. सो these are the values of the partial derivatives of pressure with respect to y, and we had to, these were what we had to calculate the pressure gradient in the x and y direction neglecting the viscous effect. So we have calculated the pressure gradients in the x and y directions here neglecting the viscous effects. So these are the answer of our first part, and for the second part, now pressure gradient is, since pressure gradient del P is equal to partial P by partial xi plus partial P by partial yj, and if we substitute the values of partial P by partial x and partial P by partial y from what we have calculated previously for this type of flow, and we have to calculate it at point 2 and 1. Simply उनकी values substitute करें from what we have calculated, this minus rho x cube y square I plus minus rho minus y square plus x square y cube x square y cube and j unit vector. We x की जगह वैल्यू 2 जो कि गिवन पॉइंट पे वैल्यू है substitute
x is equal to 2, y is equal to 1, and density, obviously density, since it is provided that the fluid is water, so density is 1000 grams per meter cube. इसको substitute करें and simply calculate this, and you will find out that this is equal to, say, minus 1000 into 8I plus 3J Newton per meter square. X and Y की जगह हमने डेंसिटी तो कॉमन ले ली with a negative sign which is minus 1000, obviously because it was here, and X की जगह 2, so here it is 2's cube, and for Y you substitute 1, so it is 8I, and when you substitute 2 for X here and 1 for Y here, simply get 3J, because 2 square 4 and minus 1, so we'll get 3J here. So this is the pressure gradient at this value, at this point, and for that point which was provided to us, we had to calculate the pressure gradient, and we did so in this example. So you've seen that we were provided with the velocity field, the x and y components of the velocity field, and we had to calculate the pressure gradient. So we made use of the Euler's equation of motion and did so in this example. And with this, I'll summarize today's lecture. Today we studied the incompressible inviscid flow and derive the equation for such type of a flow, और उसको Euler's equation of motion कहा जाता है. हमने Euler's equation of motion की different forms भी आज स्टडी की, उनको एनालाइज किया. अगेन मैं दोबारा वो चीज़ रिपीट करना चाहूँगा और आपकी तवज्जो उस चीज़ के ऊपर दिलाना चाहूँगा कि हमने फोर्स बैलेंस इक्वेशन एक अभी तक फाइंड आउट की थी, विच वाज द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन. दिस इज सेकंड इन दैट रिगार्ड. जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दैट वन इज डिफरेंट from these equations. These are force balance equation, whereas the continuity equation is the mass balance equations. So ये Euler's equation of motion जो है, पहली चीज़ आइडियल फ्लूइड्स के लिए ये एप्लीकेबल है, जिसमें हम विस्कोसिटी के इफेक्ट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं. So keep that thing in mind. Euler's equation of motion is valid for the ideal fluids only, or in the flow fields in which we can neglect the effects of viscosity. So एक तो ये चीज़ होगी. दूसरी चीज़ ये कि this is for the moving fluid, for the fluid that is in motion, whereas the case for the basic hydrostatic equation was that the fluid is in static equilibrium. Euler's equation of motion चूँकि जनरलाइज्ड फॉर्म है, सो हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं इसको in the basic hydrostatic equation if we calculate the Euler's equation of motion for the static fluid or the fluid in static equilibrium by simply substituting acceleration is equal to 0, जैसा कि हमने देखा. इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिए, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड हमने देखा कि दो किस्म की फोर्सेस, अगर प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करें तो हम किस तरह फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, मेकिंग यूज़ ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ. कीप दिस थिंग इन माइंड. फिर इन Euler's इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम प्रेशर फील्ड या प्रेशर ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो प्रॉब्लम्स. Then we solved an example जहाँ पे we saw that if a velocity field, particular type of velocity field is provided to us, उस velocity field की मौजूदगी में उसका पता होने के बाद हम किस तरीके से pressure gradients in different directions calculate कर सकते हैं. In the x and y direction, the change in pressure in the x and y directions we calculated in that example, and if a given particular point is provided to us, then we can find out the pressure gradient completely, provided the fact that density is also provided to us. Density का इल्म होना भी ज़रूरी है in order to completely determine the pressure gradient. Again, I'm repeating that Euler's equation of motions are non-linear in nature. जनरल सॉल्यूशन इनका थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि non-linearity की वजह से that too comes from the convective part or convective rate of change. Well, with this I take you to today's quote, and it says that try to develop the quality of giving
कोशिश करें कि आसानियाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए पैदा करें और देना सीखें, कि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक यू वोंट डेवलप द क्वालिटी कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो आपने लिया है इतना कुछ, जो आपको मिला है इतना कुछ, वो कितना कीमती है। जब ये क्वालिटी इंसान और हम लोग अपने अंदर पैदा करेंगे, जब हम देना सीखेंगे और देने की कदर करेंगे, तो तभी हमें जो इतना कुछ हमें मिला है बग़ैर मांगे उस सब चीज़ की कदर आएगी। और इसी तरह ये सोसाइटी स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मूव करेगी, तभी मिनहसुल कौम और ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा। हम पढ़े लिखे अच्छे और बाशऊर लोग पैदा कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ दे। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड।